So ladies and gentlemen, MSME Bharat Summit 2025 powered by GYR Capital Advisor, hiring partner Apna.co, compliance partner Mamta Benani Associates, knowledge partner MSME Development Forum, marketing partner Digital Sampark। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सबसे पहला सेशन। So ladies and gentlemen, the very first session is for EV and solar, transforming MSMEs in renewable energy. For this, I would like to invite on stage, put your hands together, our panelists. Very first, I would like to invite Mr. Anshul Gupta, Managing Director and CEO, OPG Mobility. Mr. Rajeev YSR, CEO, ThunderPlus and Group CMO. Mr. Anag Ojha, co-founder and CTO, Urja Mobility. And this session is going to be moderated by Mr. Bipin Dubey, social entrepreneur. So let's clap together and let's kickstart our very first session. Come on, everyone. हेलो, नमस्कार। ममता मैम की बातचीत के बाद काफ़ी चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट हो गई होंगी और क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा दबाव मेरे ऊपर कि इतना इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दिया है, उस एनर्जी को, उस पेस को मेंटेन करके रखना है, तो हमारे साथी सहयोग करेंगे। हम ज़्यादातर इस सेशन को हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे, कोशिश करेंगे हिंदी ज़्यादा हो, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि एमएसएमई भारत का ये जो इलाका है जहाँ पे अभी ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं वो हिंदी थोड़ा प्रेफर करते हैं। अंग्रेजी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब समझते हैं। तो बिना समय व्यर्थ किए और शुरू करते हैं हम। अनग, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जब मैम बात कर रही थी कि 99.3% जो लोग हैं वो अभी एमएसएमई सेक्टर में फॉल कर रहे हैं, एमएसएमई के कंप्लायंस में आते हैं, उसमें आज जो हम बात करने के लिए बैठे हैं ईवी एंड सोलर का, इसका स्टेटस क्या है, करंट सिनेरियो क्या है? और ये ईवी एंड सोलर चूंकि इमर्जिंग सेक्टर है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें एमएसएमई के लिए स्कोप क्या है आने वाले 5-10 साल में? Right. So, Vipin, if you talk about solar segment and EV, so it's a very prominent segment, right, and fast growing. And then MSME for solar, right? So, PM announced about Saur Urja program, right? Okay. PM announced about Saur Urja program, right? It can only be driven by MSMEs because it's a local program. And you need, installation on the rooftop. So we feel that for solar installation for this program, it's the biggest opportunity for MSME. And we see in last 1 year that many companies came into, and the number which is increasing in MSME portal, this is a biggest factor also. So we can see and the contribution of MSMEs in EV, it's going to be more than 30% in upcoming 5 years, especially because EV and solar, it's looking for localization, and where MSMEs are expert. Right. Thanks, Anand. MSME needs to be prepared for this, and MSME should take the lead because the 30% of share is going to they have. I have a question for Rajeev. Rajeev, what do you see that what kind of preparation do these MSME players need in this sector, or what kind of challenges they need to be prepared for? Very good morning, all of you. The very fact that so many bright minds with a lot of energy are here, talking about or witnessing India becoming the 4th largest economy, and at the same time committing to one another that we will continue to collaborate and contribute to take India to the 3rd and 2nd largest economy itself, I think, is a great way to begin. Can we all clap for ourselves before we move forward? We can do it much better. I believe in law of conservation of energy. What does it say? Energy can neither be created nor be destroyed, but transforms from here
to there. Of course, I made a small modification. So can I have a better applause for all of us? Fantastic. So let me answer both these questions. The first thing, if you look at EV as an ecosystem, okay, now we are in 2025, we have a good number of vehicles, be it in two-wheelers, be it in four-wheelers, both sides of choices. We can pick innovative business models, car ownership models are also there. But 7 years, 8 years, 9 years, 10 years, if at all we move ahead, who are the ones who first ventured into EVs? It is micro and small companies. It is those startups. For example, right now we are talking about the IPO of Ether. When it started 10 years ago, I mean, now that Ether is there are other bigger players that are also investors into it, which is fine. But who started it? Again, two young graduate engineers from IT Madras, that's the place where I come from. Whether it is Ether, or whether it is Avan, or whether it is Uja, or whether it is Okaya, you name the companies, or ThunderPlus, or Vito Motors, right? You name the companies that are actually prominent names now where we talk that yes, they are doing something to the EV ecosystem. Let me tell you, it was not led by the conventional OEMs. The conventional OEMs always try to play safe. In fact, there are also OEMs who lobbied that India is not ready for a pure battery electric vehicles. We need to have hybrid in between. Are you here with me? Right. So the reason why I am reflecting on the history and the context is because if at all there is any sector that actually took the risk, that actually took the lead and said that if India were to be not just a global market for the global companies, but if India were to be a global manufacturing hub for a global market, then the action needed to begin, and that was actually taken by MSMEs. Now, having said this, this revolution is definitely fueled when the bigger companies, be it Bajaj, be it Mahindras, right, be it Piaggios, etc., who have, or heroes, who have their good, I would say, line of expertise and SOPs and other things, and most importantly, the money muscle has only progressed thus far. So, the answer to the first question is, do we have, what role MSMEs have played? Do they still have enough role? Well, despite all the noise that is happening in EVs, among four-wheelers, we are not even close to 5-6% of penetration among the sales of new vehicles. Whereas the mature markets, say for example Denmark, in Europe, and some, and of course in China, they are close to 30-35% of penetration when it comes to the sale of new vehicles. What does that mean? We still have a long way to go. We are expecting EV industry alone to be a $260 billion industry by 2030. And those billions would only be counted when small MSMEs start adding millions. Are you here with me? Right. So the scope is higher, the ambition is greater, the runway is farther. So all we need to do is leverage, collaborate, and I would say co-create these opportunities so that India would not just remain as the fourth largest economy. India would continue in its spree towards becoming the largest economy in the world. And having said this, let me also talk about two statistics. Germany, which of course we know are very Rajeev, good. sorry to interrupt. I will come back to you for the next set of questions. We have Anshul here. You talked about the scope. You talked about this growth journey of. When we talk about MSMEs, they are majorly looking into the government side, how they are supporting. What kind of schemes has been proposed by your, because government is very inclined towards promoting EV and solar, what kind of schemes or the beneficiaries program that has been running in the government for supporting MSMEs? So, सबसे पहले good morning to everybody and thanks Vipin for the question. तो मेरे हिसाब से specifically for EV and solar industry, government ने शुरू से लेके इसके अंदर बहुत initiatives roll out किए. जैसे राजीव जी ने बताया कि मार्केट सबसे पहले MSMEs मूव करते हैं, राइट, उसको क्रिएट करना, ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें करना, तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपने इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत टाइम एंड टाइम अगेन रोल आउट की, राइट, जिससे पूरी कैटेगरी की अवेयरनेस आई, चाहे वो PM योजना, सोलर की योजना थी जिसके अंदर मुफ्त बिजली घरों में लगनी है,
या फिर वो ईवी के अंदर फेम सब्सिडी, EMPS, E-ड्राइव, ये सारी सब्सिडीज़ आई। तो ये सारी सब्सिडी से MSME वाली कंपनीज बहुत सारा फ़ायदा उठा पाती है, क्योंकि वो अपने कंज्यूमर को बेहतर तरीके से रीच आउट कर सकती है। एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जितनी भी इनिशिएटिव्स लेकर आए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो उससे पूरा भारत एक विजन और एक मिशन पे अलाइन हुआ। उसी प्रकार से EV सेगमेंट और सोलर सेगमेंट के अंदर जैसे क्रांति आ रही है, तो वहाँ उस क्रांति के अंदर भी गवर्नमेंट का पिवटल रोल रहा है। तो पहले ऊपर से मिशन अलाइन होता है, फिर एक पूरा भारत अलाइन होता है, उसके बाद सारे लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेशन का स्केल सबका अलग अलग होता है, बट आई थिंक अ लॉट हैज़ बिन डन बाय द गवर्नमेंट एट डिफरेंट स्टेजेस इन टाइम टू प्रमोट द सेगमेंटेशन, द इंडस्ट्री इटसेल्फ। एंड जैसे राजीव जी ने कुछ फिगर्स भी बताए, 5%, 6%, 8%, तो टाइम एंड टाइम अगेन ये इंसेंटिवाइज, जब आपको पूरे इंडिया इतना बड़ा है, मतलब यूपी, महाराष्ट्र, ऐसे कर्नाटका, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो पूरा बिजनेस मॉडल आपका लोकली भी सर्व कर सकते हैं। MSME का वैल्यू एड क्या हो सकता है, मैं थोड़ा क्वेश्चन से डिविएट कर रहा हूँ, बट एडिशनली टू ऐड टू राजीव जी पॉइंट, मेरे से रुका नहीं जा रहा, तो मेरे को बोलने का मन कर रहा है। See, we have stretched ourselves also. I've personally stretched myself into charging, to battery, to vehicles, two-wheelers and three-wheelers, and our traditional business. तो हमने भी इसको पूरा MSME की तरह शुरू किया, राइट? जब MSME की तरह शुरू किया, आज भी MSME में कुछ बिजनेसेस रजिस्टर्ड है। तो बिजनेस मॉडल कैसे बनाएं? सबसे पहली चीज़, बिजनेस मॉडल बनाने के लिए राइटली सेड बाय अनंत कि अगर आपको कोई पेन पॉइंट है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई सोल्यूशन लेकर आए। जब आप सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू इनोवेट एट अ हाई, मतलब आप इतनी ड्रास्टिक कॉस्ट कम कर दोगे, वो एक नेसेसरी चीज़ है, परफॉर्मेंस देना एक्सेट्रा, दिस इज ऑल टेबल स्टेक। बट वेयर MSMEs कैन रियली ऐड वैल्यू इवन फॉर आवरसेल्व्स इज मेकिंग रिलेशनशिप्स, राइट? तो रिलेशनशिप एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि इंडिया हो या वर्ल्ड हो, और मेरे को लगता है कि इंडिया के अंदर बिजनेस रिलेशनशिप से ज़्यादा होता है, चाहे वो आप कितने भी स्विगी, जोमेटो, सब चीज़ें हो, जो जितनी भी कन्वीनियंस आ गई, राइट? मैं अपने घर के पास वाली दुकान से ही, जो अंकल मेरे को प्यार से बात करते हैं, उन्हीं से सामान खरीदता हूँ, राइट? तो दिस इज़ हाउ थिंग्स रन एट ग्राउंड लेवल ऑल्सो। तो हमारे को समझना है, वाइल इनोवेटिंग, परफॉर्मेंस, प्राइस, कॉस्ट, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। वन थिंग दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम अ कंपनी और अ प्रमोटर इज हिज सोल, राइट? उसकी सोल बनती है रिलेशनशिप, जो वो डीलर्स के साथ करता है, या डीलर वो आगे कंज्यूमर के साथ बनाता है। तो इन सारी चीज़ों को रखते हुए गवर्नमेंट, वापस आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, जो सब्सिडीज दे रखी हैं और जो उसकी प्रोसेसेस हैं, आजकल AI के ऊपर इट इज़ सो इजी टू एक्सेस एवरीथिंग, राइट? मेरे से ज़्यादा AI एक डिटेल प्रोसेस डॉक्यूमेंट बना के दे सकता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, राइट? कंबाइनिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, इट्स फेयरली इजी टू गेट दो सब्सिडीज, एंड थोड़ा सा रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है, तो आपका केस बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। इन अ नटशेल, अगर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया। थैंक यू सो मच अंशुल। मतलब इतनी सही बता रहा हूँ मैं, इतनी इंसाइटफुल बातें हो रही हैं और प्रोसेसेस हो रही हैं कि मैं काश इसको कंटिन्यू कर पाता, लेकिन यहाँ पे आपने देखा टाइम अप हो चुका है हमारे लिए। अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारा प्लान था कि हम आपके सवाल लें और यहाँ पे डिस्कस हो, लेकिन आपने देखा ये तीनों लोग अभी यहाँ पे हमारे साथ उपलब्ध हैं, बाद में भी मिलेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो व्यक्तिगत तौर पे आप पूछ सकते हैं या हमें दे सकते हैं, हम इनके माध्यम से आपके लिए हेल्प कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना हमें अच्छी तरीके से। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी भी लग रहा है कि हमारे पास इतनी सारी चर्चा करने की संभावना है, लेकिन ये चर्चा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हो, ज़्यादा जागरूकता पड़े और EV और सोलर हमारे MSME का ड्रॉप करें। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Let's take a group picture together. And thank you so much for such an insightful session. And as Mr. Rajeev said, our EV industry is $200 billion industry. So let's just collaborate together and get it forward. I would request Mamta ma'am to please felicitate our panelists. Huge round of applause for all of them. Thank you so much.
Thank you so much for joining us.